Dear students, it's going to be our journey towards the hydrodynamics, or I should say the fluid dynamics. That's the study of fluids in motion. And in this part of the fluids, we will start our journey with the topic of viscosity. With the topic of viscosity. It is also termed as fluid friction. It's also termed as fluid friction, or we also call it as internal friction. We also call it as internal friction. सुनिए बेटा आराम से. Let's have some observation गोवर्मेन. एक ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी बेटा. I will start with, मैं बोलूंगा बेटा, different layers of a fluid, yeah, of a liquid, I will say now. Different layers of a liquid are having different velocities. अब अगर बेटा इस स्टेटमेंट की आपको एविडेंस अगर चाहिए, यू कैन हैव वन और टू ऑब्जर्वेशंस माय डियर. वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर यू पीपल, अगर आपने नोट्स किया होगा बेटा, अगर आपके पास कोई वाटर बॉडी लाइक रिवर की अगर हम बात करेंगे बेटा, रिवर की जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है बेटा, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. और जितना हम पानी के नीचे 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 जाते हैं बेटा टुवर्ड्स द बॉटम गोवर्मेन, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. इनफैक्ट अगर आपने टीवी में भी देखा होगा बेटा कि जो नीचे वाली सरफेस वाटर बॉडी की होती है, सीधे लगता है कि पानी जो है वो वहां पे रुका हुआ है, या मैं बोलूंगा बेटा उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती है बेटा. और जितना हम उस बॉटम से ऊपर की ओर आ रहे हैं टुवर्ड्स द अपर सरफेस ऑफ दैट वाटर बॉडी, जो डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है. इन जनरल आई विल से द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज. या वन मोर ऑब्जर्वेशन फॉर यू पीपल दैट कैन बी लाइक दिस, जिसको आप घर में भी कर सकते हो बेटा. एक गिलास को आप ले सकते हो बेटा, एक कंटेनर, एक गिलास को आप ले सकते हो बेटा, और इसमें जब आप पानी लोगे, आप एक काम करना, जब आप इसमें पानी लोगे बेटा, या और कोई लिक्विड, जरूरी नहीं है कि वाटर की बात चलेगी बेटा, जब आप इसमें पानी लोगे बेटा, फिर आप इसको स्टीयर करो. जब आप स्टीयरिंग करोगे बेटा, यू विल सी गोवर्मेन, जो डिफरेंट लेयर्स लिक्विड की होंगी बेटा, दे विल फॉलो द पाथ लाइक दिस. एंड यू कैन नोट्स माय डियर, आप अपनी आंखों से देखोगे बेटा कि जो लेयर होगी इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इन कॉन्टैक्ट विद द, आई शुड से, द वॉल्स ऑफ द गिलास, जिस कंटेनर में आपने इस पानी को लिया होगा बेटा, जो लेयर्स उस आई शुड से गोवर्मेन सॉलिड सरफेस जो बेटा कंटेनर की है उसके साथ बेटा इन कॉन्टैक्ट में होंगी, तो उनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी बेटा. और जितना आप बेटा इस कंटेनर की सॉलिड सरफेस से दूर भागोगे टुवर्ड्स द सेंटर, आई शुड से, आप बोलोगे देयर इज गोइंग टू बी द इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स. या मैं बोलूंगा बेटा जो सेंटर मोस्ट लेयर होगी बेटा, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी. और जितना हम इस सेंटर से दूर दूर भागेंगे टुवर्ड्स द आई शुड से, द व्हाट यू कॉल ए सॉलिड इंटरफेस और सॉलिड सरफेस, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है बेटा. दिस इज वन ऑफ द एविडेंस फॉर यू पीपल, वन ऑफ द प्रूफ, और आई शुड से वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर यू पीपल, कि जो डिफरेंट लेयर्स होती है लिक्विड या फ्लूइड की बेटा, उनकी जो वेलोसिटीज होती है वो डिफरेंट होती है बेटा. अब अगर मैं एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊंगा बेटा, यहां पे सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है बेटा. दिस इज द सिलेंड्रिकल ट्यूब फॉर यू पीपल. ये हमारे पास बेटा सिलेंड्रिकल ट्यूब. अब बेटा इस ट्यूब को आप एनालाइज करना बेटा, इट्स एक्चुअली लाइक दिस. यहां से एक सरफेस इसकी और वहां से बेटा एक सरफेस, और ये है बेटा वो लेयर, जो सेंटर वाली लेयर, इसकी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा मैं दिखा रहा हूं बेटा. और जितना मैं बेटा इस सेंटर से दूर भागूंगा बेटा, जो वेलोसिटी है बेटा वो डिक्रीज होती जा रही है बेटा. एंड फाइनली गोवर्मेन, द लेयर इन कॉन्टैक्ट द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द ट्यूब, इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, उसकी वेलोसिटी मिनिमम है बेटा. इसी तरह यहां से भी आप देखोगे बेटा,
द वेलोसिटी डिक्रीजेस, जितना हम इस ट्यूब की एक्सिस से दूर भाग रहे हैं, जितना हम वॉल्स ऑफ द ट्यूब की तरफ जा रहे हैं बेटा, जो वेलोसिटी डिफरेंट लेयर्स की है वो डिक्रीज हो जाती है बेटा. सो आई कैन हैव द स्टेटमेंट दैट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए लिक्विड आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज. अब बेटा इसकी वजह से क्या होता है, जब डिफरेंट लेयर्स की बेटा, डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है बेटा, हर एक फास्ट मूविंग लेयर जो है वो कोशिश करती है एक्सेलरेट एक स्लो मूविंग लेयर को करने की. एवरी फास्ट मूविंग लेयर tries to accelerate every slow moving layer, and at the same time every slow moving layer tries to retard, tries to decrease the velocity of the fast moving layer. In general my dear, there is an opposition, there is a force जिसको मैं नाम दूंगा बेटा viscous force. मैं बोल रहा हूं बेटा different layers जो liquid की है उनकी जो velocity है वो different है बेटा, किसी की वेलोसिटी ज्यादा, किसी की वेलोसिटी कम. उसमें हमने देखा बेटा जितना हम इस कंटेनर की सरफेस के साथ भागेंगे बेटा, या अगर आपके पास कोई रिवर बॉडी है, रिवर है बेटा, उसमें जितना बॉटम की ओर जाओगे बेटा उतनी वेलोसिटी चेंज या डिक्रीज हो जाती है बेटा. सो डिफरेंट लेयर्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी. ड्यू टू डिफरेंस इन वेलोसिटी every fast moving layer tries to accelerate the every slow moving layer, and at the same time every slow moving layer tries to retard the fast moving layer, because of which two layers exert tangential force on each other. जिस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा viscous force, and because of that viscous force, because of that opposing force, जो रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन, एंड द फोर्स बिटवीन द लेयर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. एक बार फिर बेटा क्विक रिव्यू माय डियर, हमने बोला बेटा कोई भी लिक्विड आप लेते हो, लिक्विड इन मोशन माय डियर या फ्लूइड इन मोशन बेटा, तो क्या होता है जो डिफरेंट लेयर्स है उनकी जो वेलोसिटी है बेटा, उनकी जो वेलोसिटी है बेटा वो डिफरेंट होती है बेटा. बिकॉज ऑफ दैट एवरी फास्ट मूविंग लेयर ट्राइज टू एक्सेलरेट every slow moving layer, and every slow moving layer government tries to retard the fast moving layer, because of which two layers exert tangential force on each other. जिस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा viscous force, और वो फोर्स क्या करता है, the force tries to destroy the relative motion between them. The property of a liquid due to which it opposes the relative motion between its different layers is called viscosity or fluid friction or internal friction government, and the force between the layers opposing the relative motion is called viscous force. So we can have some lines government. मैं बोलूँगा बेटा due to difference in velocities, every fast moving layer tries to accelerate the every slow moving layer, and every slow moving layer tries to retard the every fast moving layer, because of which two layers exert tangential force on each other, because of which two layers exert tangential force on each other, which
which tries to destroy the relative motion, which tries to destroy the relative motion between them, which tries to destroy the relative motion between them. Now we can have the definition of viscosity. मैं लिखूंगा बेटा the property of a fluid, or I can say of a liquid, the property of a liquid due to which it opposes the relative motion, between its different layers. Between its different layers is called viscosity or fluid friction or internal friction and the force between the layers opposing the relative motion, is called viscous force. So जो फोर्स बेटा दो लेयर्स के दरमियान रिलेटिव मोशन को बेटा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. और इस विस्कस फोर्स का जो ओरिजिन होता है बेटा, ओरिजिन इसका फिर से है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर. और आई कैन से माय डियर your viscosity is due to intermolecular forces going on. Now let's have an observation my dear. एक observation लेते हैं बेटा, इससे और क्लियर हो जाएगा बेटा. सपोज बेटा अगर आपके पास बेटा 3 लिक्विड्स में लूंगा बेटा, सपोज आई एम गिविंग यू 3 गिलासेस. एक गिलास में पानी है, दूसरे गिलास या बोतल की भी बात कर सकते हैं बेटा, दूसरी बोतल में सपोज बेटा कोई आई शुड से कुकिंग ऑयल है, और तीसरी बोतल में बेटा हनी है. और जब मैं बेटा आपको बोलूंगा कि तीनों बोतल्स को एम्प्टी करो, मैं क्या देखता हूं बेटा, वाटर जो है उसकी फ्लो रेट जो है वो ज्यादा है, और कुकिंग ऑयल की फ्लो रेट वाटर से कम, और हनी की जो फ्लो रेट है बेटा वो उन दोनों से कम है बेटा. सो आई कैन से माय डियर डिफरेंट लिक्विड्स आर हैविंग डिफरेंट फ्लो रेट्स. Now I will say my dear different liquids are having different viscosities. क्योंकि बेटा अगर फ्लो रेट में डिफरेंस है, इट मींस अगर किसी की फ्लो रेट ज्यादा है वहां पे जो विस्कोसिटी है वो कम है बेटा, और अगर किसी की फ्लो रेट कम है वहां पे विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा है बेटा. सो आई कैन हैव एन ऑब्जर्वेशन. आई विल टेक 3 लिक्विड्स माय डियर. यू कैन हैव द लिक्विड, आई विल से वाटर. यू कैन हैव द लिक्विड, आई विल से सपोज यू आर हैविंग कुकिंग ऑयल, एंड आई कैन हैव द लिक्विड इन द form of I should say honey. मैं बोलूंगा बेटा different liquids are having different flow rates. Now we can say they are having different viscosities. So अगर बेटा different liquids की बेटा जो flow rate है वो different है, that is because of different I should say viscosities. उसके बाद बेटा if we want to calculate the viscous force, अगर हम viscous force को calculate करना चाहते हैं, या और एक पैरामीटर हमें इंट्रोड्यूस होगा बेटा what we call as coefficient of viscosity, उसके लिए हम यूज करते हैं Newton's law of viscosity. So the next thing I will write Newton's law, or you can say Newton's formula, Newton's law of viscosity.
और इससे हमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है बेटा, व्हाट वी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, व्हाट वी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सुनिए बेटा आराम से, अगर मैं यहां पे एक लिक्विड प्रोफाइल बनाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज द लिक्विड प्रोफाइल फॉर वी पीपल। ये है हमारी बेटा सॉलिड सरफेस, दिस इज द सॉलिड सरफेस फॉर वी पीपल। ये हमारे पास सॉलिड सरफेस, हमने देखा बेटा द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस, उसकी वेलोसिटी मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो। सो आई विल शो द वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस। फिर जितना हम ऊपर जाते हैं बेटा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बेटा डिफरेंट लेयर्स की। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स, यू कैन सी माय डियर, जितना मैं इस सॉलिड सरफेस से ऊपर जाता हूं बेटा, हमारी जो वेलोसिटी है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, एंड इट इज मैक्सिमम फॉर द टॉप मोस्ट सरफेस इन दिस केस। ओके, सपोज बेटा ये है मेरी रेफरेंस लेवल, आई कॉल दिस एज x इक्वल टू 0। मैं मानूंगा सपोज जो ये वाली लेयर है बेटा, इसकी वेलोसिटी मैं v मानूंगा बेटा, और टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी, और इसकी वेलोसिटी मैं मानूंगा बेटा v प्लस dv। इस लेयर की जो डिस्टेंस मैं मानूंगा बेटा बॉटम सरफेस से, वो मैं मानूंगा बेटा x, और अगर मैं इस लेयर की बात करूंगा, इसकी डिस्टेंस मैं यहां से दिखाऊंगा बेटा, इसकी डिस्टेंस मैं मानूंगा बेटा x प्लस dx। तो जो ये डिस्टेंस आपको मिलेगी बेटा, दिस डिस्टेंस इज dx फॉर यू पीपल। Now I will directly go for the calculation of the viscous force. If I recall you what my viscous force is, it is the force जो फ्लूइड में एक लेयर दूसरी लेयर पे जाती है, दूसरी लेयर पे एक्सर्ट करती है बेटा। एक लेयर जो दूसरी लेयर या डिफरेंट लेयर्स जो एक दूसरे पे फोर्स डालते हैं बेटा, जिसका इंटेंशन होता है रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करना, दैट फोर्स इज एक्चुअली विस्कस फोर्स। आई विल राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, the viscous force between two layers, the viscous force between two layers is given as per Gubernian Newton, this viscous force F is directly proportional to the area of cross section, to the area of cross section of two layers in contact. So I can say from this F is directly proportional to A. Now there is the term for V people my dear, what we call as velocity gradient. ग्रेडियंट को थोड़ा बेटा हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इन योर प्रीवियस चैप्टर्स माय डियर। हमने थोड़ा बहुत ग्रेडियंट के रिलेटेड बोला था बेटा, हमने बोला था हे इट इज इक्विवेलेंट टू द फैंसी वर्ड फॉर डेरिवेटिव। जिस तरह हम डेरिवेटिव में देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, इन केस ऑफ ग्रेडियंट वी टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। Suppose beta one of the example for you people is Gubernian, I will say the example of pressure gradient. आपने fluid statics में पढ़ा होगा बेटा, fluids में आपने पढ़ा होगा when you are having the fluid in the state of rest, कि जितना हम नीचे जाते हैं बेटा उतना हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बेटा, what you call as hydrostatic pressure. In fact उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे बेटा, उसके लिए आपकी एक्सप्रेशन हुआ करती थी your hydrostatic pressure is given by rho gh. If you are having some container like this, इसमें कुछ फ्लूइड है बेटा, अगर आप नीचे आते हो by an amount of, I should say by an amount of h, then the fluid, then the pressure at this point is given by rho gh, where rho is the density of the liquid, g is the acceleration due to gravity, and h is the depth. So जितना हम नीचे जाते हैं बेटा, it is again the distance factor Gubernian, there is change in pressure. Now I can highlight the quantity जिसको मैं नाम दूंगा pressure gradient, that is given by dp upon dx. इसी तरह बेटा और एक एग्जांपल आपके सामने है बेटा, you are having some, I should say some heating device in the room. फिर जब बेटा आप इस हीटिंग डिवाइस या उस हीटर के नजदीक जाते हो बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जितना आप उस बेटा हीटर से दूर पाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यू कैन सी माय डियर द टेम्परेचर चेंज विद द डिस्टेंस, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, आई एम इंटरेस्टेड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द डिस्टेंस, दैट इज dt upon dx, and I call this quantity as temperature gradient. इसी तरह बेटा अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे बेटा, प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी वेलोसिटी चेंज
चेंज होती है विद द डिस्टेंस गोबर में ऑन. सो देयर इज द टर्म व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड एज पर न्यूटन माय डियर, this viscous force F is directly proportional to the velocity gradient that is given by dv upon dx. This is the term for you people what we called as velocity gradient. So as per Newton, the viscous force, that is an opposing force between the two layers, the force which tries to destroy the relative motion between the layers, that force is directly proportional to the velocity gradient my dear. और अगर आप इन results को combine करोगे बेटा, you will write F is proportional to A into dv upon dx, where dv upon dx is your वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करो बाय इक्वालिटी, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं बेटा, दिस इज द कांस्टेंट फॉर यू पीपल, और यहां से आपका अपना a और यहां से बेटा dv upon dx. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर विस्कस फोर्स, वेयर दिस कांस्टेंट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेयर दिस कांस्टेंट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कोफिशिएंट. This is called coefficient of viscosity, and the negative sign in the expression just tells you that the viscous force is opposite to the motion of the fluid, to the motion of the liquid. Negative sign signifies that the viscous force is acting opposite to the fluid flow. So अगर मैं थोड़ा यहाँ पे बताता भी चलो बेटा, जो आपकी negative sign appear हो रही है बेटा फॉर्मूला में, it just tells you कि जो आपका viscous force है, जो आपका viscous force और बेटा जो फ्लूइड फ्लो है बेटा, जो आपका विस्कस फोर्स एंड फ्लूइड फ्लो है बेटा, द टू गाइज are in the opposite direction. This is the mathematical form of Newton's law of viscosity. Let's have some few lines on this coefficient of viscosity, my dear. Okay, if you want to define this coefficient of viscosity, I will write in its definition of coefficient of viscosity. Definition of coefficient of viscosity. सुनिए बेटा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा. I will write the expression, I will ignore the negative sign. F is given by, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा बेटा, A dv upon dx. Now what I will do in some situation, मैं बोलूँगा if A is equal to 1, means जो area of layers in contact with each other वो unity है. It can be 1 square meter, it can be 1 square centimeter, so on and so forth. और इसी तरह बेटा जो velocity gradient है dv upon dx, वो भी मैं 1 लूंगा बेटा. बेटा जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, a की जगह 1, dv by dx की जगह भी बेटा 1, you will end with this coefficient of viscosity is equal to f. So you will end with f is equal to coefficient of viscosity. Now I can define coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity is equal to viscous force which maintains a unit velocity gradient. You can see my dear, dv by dx हमने 1 लिया, 1 unit stands for 1 गोबर में. मैं बोलूंगा बेटा coefficient of viscosity is equal to viscous force which maintains unit velocity gradient between two parallel layers, each of unit cross sectional area. So I will write गोबर में, hence coefficient of viscosity is equal to viscous force. Coefficient of viscosity is equal to viscous force. कौन सा viscous force बेटा? Which maintains a unit velocity gradient. Which maintains unit velocity gradient. Which maintains unit velocity gradient between two parallel layers, between two parallel layers, each of unit stands for 1. You can see हमने a भी 1 लिया बेटा, each of unit cross sectional area, this is your definition of coefficient of viscosity. Now the next journey is about units of coefficient of viscosity.
units of coefficient of viscosity. सुनिए बेटा आराम से. It's again going to be, I should say, the easy game for you people. You just have to rearrange the equation, my dear. I will start first with the CGS unit. You are having the system of units, what we call as CGS system, my dear. I will write the expression F is equal to coefficient of viscosity A with dv upon dx. इक्वेशन को जब rearrange करोगे बेटा, इस coefficient of viscosity को वहीं पे आप रखो बेटा. It is F, ये A और dv upon dx जो है ये आपको डिवाइड में मिलेगा बेटा, और यहां से आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द CGS सिस्टम, माय डियर, योर फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइन, माय डियर. द CGS यूनिट ऑफ द फोर्स इज डाइन डिवाइड बाय, एज फार एज द एरिया इज कंसर्न्ड, योर एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम इज सेंटीमीटर, सो यू विल गो फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर. देन द वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकंड एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर हैविंग अगेन सेंटीमीटर. अगर आप इसको थोड़ा rearrange करने की कोशिश करोगे बेटा, you are having dyne here, I lost my centimeter and centimeter. फिर इस पर सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड बनेगा बेटा, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे बेटा तो सेंटीमीटर रेज्ड पावर -2 बनेगा बेटा. दिस क्वांटिटी dyne second per square centimeter is what we called as poise, which becomes the CGS unit of my coefficient of viscosity. अब अगर बेटा SI यूनिट की बात करेंगे बेटा, अगर SI यूनिट की बात करेंगे बेटा, फिर इस डाइन को हम रिप्लेस करेंगे by the SI unit, that's Gubernois-Newton for you people. इस डाइन को हम रिप्लेस करेंगे बाय द SI यूनिट ऑफ फोर्स, दैट्स न्यूटन फॉर वी पीपल. इन द डिनोमिनेटर इज एरिया पैरामीटर, उसकी जगह लिखूंगा मीटर स्क्वायर. देन यू आर हैविंग द वेलोसिटी, दैट्स dv, दैट्स मीटर per second, and in the denominator it is again meter. After I should say solving this equation, या इसको rearrange करूंगा बेटा, it is Newton in the numerator. फिर बेटा पर मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड को ऊपर ले जाओ बेटा तो सेकंड बनेगा बेटा, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर रेज्ड पावर -2 बनेगा बेटा. दिस न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर is what we call as decapoise, which is the SI unit of the coefficient of viscosity, और अगर हम relation की बात करेंगे बेटा, the relation between the decapoise and the poise, remember my dear, one decapoise is equal to 10 poise, my dear. This is the relation between the decapoise and the poise. And one more thing, my dear, जिसको आप खुद देखिएगा बेटा, that is definition of वन डेकापॉइस. आप वन डेकापॉइस को बेटा कैसे डिफाइन करोगे बेटा, जब आप बेटा वन डेकापॉइस, डेफिनेशन ऑफ वन डेकापॉइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको आप क्या बेटा कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली यू विल यूज द एक्सप्रेशन, माय डियर. हर एक क्वांटिटी आप यूनिटी लोगे बेटा. आई विल से गुबरनोन, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय F डिवाइडेड बाय A इनटू dv अपॉन dx. नाउ अब मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूंगा बेटा, मैं F को लूंगा बेटा 1 न्यूटन, मैं एरिया को लूंगा बेटा 1 स्क्वायर मीटर, और मैं dv बाय dx को लूंगा बेटा 1, ऊपर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में dx है बेटा तो मीटर. जब मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा बेटा, आई विल एंड विद द रिजल्ट n इज इक्वल टू 1, और फिर मुझे मिलेगा बेटा न्यूटन सेकंड, और इसी तरह बेटा पर मीटर स्क्वायर, जो हमने यहाँ देखा बेटा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम डेकापॉइस का नाम देंगे बेटा. मैं बोलूंगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज सेड टू बी 1. दिस गाय, माय डियर, I can write coefficient of viscosity 1. This guy for you people is decapoise. मैं बोलूँगा बेटा coefficient of viscosity is said to be 1 decapoise if 1 Newton of force maintains the velocity gradient of 1 meter second फिर per meter बेटा between the layers each of area या with the area in contact of 1 square meter. एक बार फिर बेटा, if you want to define 1 decapoise, you will say coefficient of viscosity is said to be 1 decapoise if how much force? 1 Newton of force maintains the velocity gradient of how much? 1 meter per second per meter between the two layers each of area या area in contact is 1 square meter. That is actually the definition of your 1 decapoise. Okay, थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा आगे चलते हैं. It will be slight. I will go for Gubernois comparison. I will go for Gubernois comparison between
दिस विस्कोसिटी या जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं बेटा, कंपैरिजन बिटवीन फ्लूइड फ्रिक्शन and solid friction. When I'm saying solid friction, you have already done that in the dynamics chapter. When it was the case of sliding, my dear, when one body slides over another body, my dear. Comparison between fluid friction and the solid friction, my dear. अगर मैं बेटा पहले similarities की बात करूंगा बेटा, सिमिलैरिटीज की बात करूंगा बेटा, सिमिलैरिटीज में पहली सिमिलैरिटी में क्या लेता हूं बेटा, मैं बोलूंगा बेटा बोथ अपोज रिलेटिव मोशन, दोनों बेटा रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं बेटा, बोथ अपोज रिलेटिव मोशन, दोनों बेटा रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं बेटा. नंबर 2, व्हेन वी टॉक अबाउट आई शुड से द ओरिजिन ऑफ दीज टू फ्रिक्शन, वेदर यू टॉक अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन, बोथ फ्रिक्शंस आर ड्यू टू intermolecular forces, both frictions are due to intermolecular forces. Okay, now as far as I should say the differences are concerned, my dear, अगर हम differences की बात करेंगे बेटा, when we talk about Gubernian fluid friction, जब हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं बेटा, your fluid friction is the function of the area. लेकिन अगर आप बेटा सॉलिड फ्रिक्शन को बेटा याद करोगे बेटा, योर सॉलिड फ्रिक्शन is independent or I should say is not the function of area. इसी तरह अगर आप दूसरा पॉइंट लोगे बेटा, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस माय डियर, आई मस्ट recall you, your solid friction was the function of normal reaction my dear. I must recall you, force of friction is given by mu times n Gobernian. लेकिन जब हम बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं बेटा या विस्कोसिटी की बात करते हैं, I will write fluid friction is not the function of my normal reaction, is not the function of normal reaction, but as far as the solid friction is concerned, जब बेटा हम solid friction की बात करते हैं बेटा, that is the function of the normal reaction, that is the function of the normal reaction. This was, I should say, Gubernian, the comparison between the fluid friction and the solid friction. Okay my dear, let's move onwards. Now the next topic for we people is what we called as Stokes law. देखो बेटा, स्टोक्स लॉ को समझने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस को पहले लेते हैं बेटा. एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है बेटा, अगर आपके पास एक कंटेनर है, सपोज बेटा यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है बेटा, अगर इस कंटेनर में सपोज बेटा कोई लिक्विड आप लेते हो बेटा, सपोज मैं वाटर लेता हूं बेटा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक स्टून को रिलीज करूंगा बेटा. जब मैं स्टून को रिलीज करूंगा बेटा, एवरीबॉडी नोज दैट, यू पीपल नोज दैट कि स्टून नीचे आएगा विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब तक बेटा ये फ्लूइड से बाहर है, लिक्विड से बाहर है बेटा. सो यू हैव रिलीज्ड stone from some height. When you will release it, it's the case of motion under gravity. तो stone नीचे आएगा बेटा with the acceleration equal to acceleration due to gravity. अब क्या होगा बेटा, you can realize it yourself my dear. अगर आप इसको बेटा, इस कंटेनर को बेटा, I should say transparent कंटेनर लेते हो बेटा, ताकि आपको अंदर का दिखे. जब ये stone बेटा पानी के अंदर जाता है बेटा, you will see my dear, ये अभी भी नीचे जाएगा बेटा, but it will go down with the acceleration my dear, and that acceleration will be now less than g. The acceleration will be now less than g. Now अगर बेटा acceleration अब कम हुई बेटा, now there has to be an opposing force बेटा, जो इसकी acceleration को कम करता है बेटा. Gubernian acceleration depends on the net force. इससे पहले gravitational force काम कर रहा था और वो gravitational force इस body की motion के favor में था, लेकिन अब जो body बेटा liquid में enter होती है, इसकी जो acceleration है वो कम हो जाती है बेटा. That has to be due to the force my dear, and that force is what we called as viscous force. Now confuse होने की जरूरत है ही नहीं बेटा. आप बोलो कि हमने viscous force अभी डिस्कस किया बेटा, वो एक viscous force है बेटा, the force which is responsible for the property of I should say viscosity, या मैं बोलूंगा बेटा वो force जो है that acts between the layers of the liquid. लेकिन ये force act होता है बॉडी में जो एक viscous fluid के थ्रू, जो एक viscous medium के थ्रू बेटा मूव करती है. This is one example. Example one. Example number two for you people. बेटा आपने देखा होगा जब रेन ड्रॉप्स नीचे आते हैं, उन रेन ड्रॉप्स की कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और जो कि उतनी ज्यादा नहीं होती है बेटा.
वरना अगर हम देखेंगे बेटा, रेन ड्रॉप्स जो आते हैं बेटा एक अच्छी खासी हाइट से आती है बेटा, दैट्स फ्रॉम द क्लाउड्स. Now, from the concept of this, I should say gravity or acceleration due to gravity or motion under gravity, हर सेकंड के बाद velocity increase होनी चाहिए by an amount of 9.8 meter per second और I should say 10 meter per second. लेकिन जो rain drops है वो नीचे आते हैं बेटा with some constant velocity, and that's again due to the force what we called as Gubernian viscous force. और इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेता जाऊं बेटा, अगर आप सपोज बेटा ट्रैवल करते हो, आप बाइक पे हो बेटा, आप एक ड्रैग फील करते हो बेटा, जब आप बाइक बेटा राइड करते हो बेटा, जब आप बाइक चलाते हो बेटा, एक ड्रैग आप फील करते हो बेटा, एक फोर्स आप फील करते हो बेटा, एंड दैट फोर्स इज अगेन व्हाट यू कॉल एज विस्कस फोर्स. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर, जितनी आप अपनी वेलोसिटी या स्पीड को बढ़ाते हो बेटा, वो ड्रैग आप ज्यादा फील करते हो बेटा, ज्यादा फील करते हो बेटा. इन फैक्ट दिस force which I am talking about, viscous force my dear, is a velocity dependent force. और इसी तरह और एक एग्जांपल से आपसे एक और एक एग्जांपल से बेटा आपको आइडिया मिलेगा बेटा, जो एक पर्सन होता है बेटा which is using the parachute, जब बेटा वो नीचे आता है बेटा, वो इसी फोर्स को यूज करता है बेटा, this viscous force and opposing force my dear, जिसकी वजह से वो सेफली नीचे आता है बेटा. सो मैं बोलूंगा बेटा, when a body moves through a viscous medium, when I'm saying viscous medium, it means there has to be some non-zero coefficient of viscosity my dear. Its motion is opposed because of a force what you call as viscous force my dear, which increases with increase in velocity my dear. And as far as the Stokes law is concerned beta, Stokes law enables us to calculate this viscous force. Hey my dear, I am reminding you once more my dear, एक viscous force हम discuss करते हैं बेटा inside the fluid, जो viscous force बेटा that's again opposing force, लेकिन वो force बेटा जो है वो force act करता है between the layers my dear, that's the force जो एक लेयर दूसरी लेयर पे एग्जर्ट करती है बेटा, so as to destroy the relative motion. लेकिन जिस विस्कस फोर्स की मैं बात करता हूं बेटा, जिस विस्कस फोर्स की मैं बात इस वक्त करता हूं बेटा, that is the viscous force जो एक मूविंग बॉडी पे पड़ता है in the viscous medium. And as far as the Stokes law is concerned my dear, this Stokes law enables us to calculate the viscous force acting on a body in the viscous medium. So I will say Gubernian, I will be having some lines. I will say when a body moves through a viscous medium, this is an essential condition for this viscous force my dear. When a body moves through a viscous medium, its motion is opposed. Its motion is opposed because of a force, in fact I should say because of an opposing force called viscous force, which increases with velocity, I can have some I should say observations जिससे इसका आइडिया मिलेगा बेटा. This was the observation number 1 for you people, that is I should say motion of stone inside water. Okay, I can have the second observation for you people, that is drag, or I should say this force which you are feeling, suppose when you are riding on some motorbike. Okay beta, third I will say speed of raindrops is less than the speed, or I should say velocity, of freely falling body. And that's again my dear because of this viscous force, speed of freely falling body. Okay, I can have the fourth example for you people. I will write because of viscous force.
because of viscous force, a man easily comes down. A man easily comes down with the help of parachute. With the help of parachute. And my dear, I can have one more example, my dear. अगर आपको थोड़ा याद होगा बेटा, motion under gravity is independent of the mass of the body. उसमें हम एक illustration kinematics में देख चुके हैं बेटा कि अगर आप एक stone और एक paper या एक feather को बेटा release कर रहे हो from same height, उनको बेटा ज़्यादा time लगता है, उनको different time लगता है, बेटा नीचे आने में बेटा. Even if the motion under gravity is independent of the mass, the reason कि जो feather होती है या जो paper होता है बेटा उसको ज़्यादा time क्यों लगता है? It is because of this opposing force, what we call as viscous force, my dear. So these are some different observations, my dear, जिससे आपको इस viscous force का idea मिलेगा बेटा. Now as far as the calculation of this viscous force is concerned, the weapon for we people is Stokes' law. So I can say, my dear, this Stokes' law enables us. I will write Gubernon. Stokes' law enables us to calculate. Stokes' law enables us to calculate the viscous force. Calculate the viscous force acting on a body in viscous medium. Acting on a body in viscous medium. Okay, my dear. Now let's go for, I should say, the derivation of this force, my dear. I will write let's consider a spherical body. Let's consider a spherical body of radius r, moving with the velocity v, in a viscous medium of coefficient of viscosity eta. ये है बेटा आपका coefficient of viscosity. Now I will write according to Stokes' law. The viscous force F is directly proportional to the coefficient of viscosity, is directly proportional to the velocity of the body, and is directly proportional to the R. और अगर हम बेटा इन रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे बेटा, आई विल राइट F is proportional to coefficient of viscosity, velocity and R. F proportionality को रिप्लेस करो बाय इक्वालिटी बेटा. The constant which we are using here is 6 pi. तो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगी बेटा 6 pi coefficient of viscosity V and R. This is the expression for your, I should say, known viscous force. Now अब अगर बेटा एग्जाम में आपको बेटा इसकी डेरिवेशन बेटा पूछी जाती है, that's very simple for you people, because you are going to use the tool, that is the tool of dimensional analysis. आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर आपको इसकी बेटा this F is equal 6 pi eta V R, इसकी अगर आपको बेटा डेरिवेशन चाहिए बेटा, you are going to use one of the application of dimensional analysis, known, that is what we called as to derive the relation between the various quantities. You will start your analysis like this. Force is directly proportional to coefficient of viscosity raised to power A. You will go for force. This viscous force is directly proportional to velocity raised to power B. You will go for force is proportional to radius of the spherical body raised to power C. Then you are going to combine the result. F is proportional to coefficient of viscosity raised to power A and velocity raised to power B and the radius raised to
power c, then you are going to find the value of a, b and c by using the what we call as principle of homogeneity of dimensions, my dear. F proportionality को replace करो by equality, you will put the dimension less constant here, that's k, that's given by k, coefficient of viscosity raised to power a, velocity raised to power b, radius raised to power c, और आपका k जो यहाँ पे होता है बेटा वो होता है 6 pi, and at the end my dear you will end with result f is equal to 6 pi eta vr, which is the expression for your viscous force, and this is what we call as Stokes law, the mathematical form of Stokes law. So about Stokes law we will say, my dear, it is the law which enables us to calculate the viscous force acting on a body in the viscous medium. Okay, let's move onwards. उसके बाद बेटा और एक टर्म जो आपके लिए है, that's also one of the important term and can be asked in your board exam, my dear. The term or the topic for you people or we people is terminal velocity. देखिए बेटा आराम से, when we talk about terminal velocity, इससे पहले बेटा मैं terminal velocity पे आऊँगा बेटा, I must recall you something about what we call as buoyant force or upthrust, my dear. There is a term for we people government जिसको हम नाम देते हैं बेटा, फ्लूइड स्टैटिक्स में आप इसको पढ़ चुके हो बेटा, दैट इज buoyant force, या 9th में भी आपने इसका सुना होगा बेटा, और इट इज कॉल्ड upthrust. बेटा इसकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस या इलस्ट्रेशंस है बेटा आपके पास. गुबरम्योन आपने ये चीज एनालाइज किया होगा बेटा कि जब आप बेटा बात लेते हो, जब आप नहाते हो बेटा, you are having the water in the bucket, फिर आप क्या करते हो बेटा, then you are having the mug in your hand. आपको बेटा पानी का मग उठाना है बेटा. जब आप इस मग को फिल अप करते हो बेटा, यू कैन सी माय डियर, यू कैन इजीली डू इट. यू आर जस्ट फिलिंग दिस मग. आप इस मग में पानी लेते हो बेटा. इनफैक्ट यू कैन मेक इट मूव विथ योर फिंगर. इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल. बट जब आप इसको बाहर निकालते हो, ओह इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल. आपको लगता है कि इसका कुछ अच्छा खासा वजन है बेटा, when it is coming out of the water, when it is coming out of the liquid. लेकिन inside the liquid बेटा आपने फील किया, आपने महसूस किया बेटा कि जो बेटा आपके हाथ पे फोर्स था वो बहुत कम था बेटा. या मैं ऐसे भी आपको बोल सकता हूँ बेटा, आपसे बोला जाता है, घर में आपको बोला जाता है, ये बकेट ले लो, एक बड़ा सा बकेट आपके पास है, एक पानी का बकेट लाओ फ्रॉम द टैंक या फ्रॉम द रिवर. नाउ फर्स्ट यू हैव टू फिल दैट बकेट. बेटा जब आप उस बकेट को फिल करते हो बेटा, आप ये चीज कीजिएगा बेटा घर में, अगर आप उस बकेट को मूव करवाओगे इनसाइड द वाटर, यू कैन मेक इट इजीली. इनफैक्ट यू कैन मेक इट विथ योर फिंगर्स. बट when it comes, जब आपको बेटा इस बकेट को पानी से बाहर निकालना है, now it is filled bucket my dear, you will feel कि आपको एक अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ता है बेटा. It means outside the water जो एक बॉडी का वेट होता है वो ज्यादा होता है, या मैं बोलूंगा बेटा उसका ट्रू या परफेक्ट या एक्चुअल वेट होता है, बट इनसाइड द वाटर आपके लिए वो हल्का होता है बेटा. नाउ दैट इज नॉट द ट्रू वेट, दैट्स नॉट द एक्चुअल वेट, वी कॉल इट एज apparent weight, and in fact that apparent or new weight is less than the actual or true weight. It means अगर my dear, जब हम वेट की बात करते हैं, weight is the gravitational pull, gravitational force with which body is attracted towards the center. अगर फ्लूइड के बाहर, अगर लिक्विड के बाहर कुछ वेट आप फील करते हो, लेकिन इनसाइड द वाटर वो वेट आपके लिए कम होता है बेटा, वो वेट आपके लिए कम होता है बेटा. एंड दैट अगर वो वेट कम हुआ बेटा, दैट हैज टू बी ड्यू टू द फोर्स that will be in the opposite direction to that of the weight, or I should say that has to be in the upward direction, and that force is what we call as government buoyant force or upthrust my dear. I can make the conclusion government, एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो पानी के अंदर जो है, वो लिक्विड के अंदर जो है वो कम होता है बेटा. And this loss of weight is due to an upward force, what we call as buoyant force or upthrust. And if you want to calculate this buoyant force or upthrust, आपने सुना होगा एक principle what we call as Archimedes principle. And as per Archimedes principle my dear, Archimedes principle से हम क्या करते हैं, इस buoyant force को कैलकुलेट करते हैं बेटा. जब आप एक बॉडी को पानी में लोगे बेटा, ये बॉडी जो है सॉलिड बॉडी जो है बेटा, ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, उस लिक्विड का अपना कुछ वेट होगा बेटा.
एज पर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल दिस बायोंट फोर्स, आई कॉल दिस एज FB या अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसड। ये भी आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी बेटा, इनफैक्ट 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ते हो बेटा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली लिक्विड के अंदर ले जाते हो बेटा, देयर इज द लॉस ऑफ वेट, दैट लॉस ऑफ वेट इज ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स व्हाट वी कॉल एज बायोंट फोर्स और अप थ्रस्ट। और उसके बाद बेटा जब आप एक बॉडी को लिक्विड के अंदर लेते हो, वो कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, वो कुछ ना कुछ लिक्विड हटा रहा है अपनी जगह निकालने के लिए बेटा, चाहे पार्शियली बेटा आपने उसको लिया पानी में या लिक्विड है बेटा या कंप्लीटली, इन बोथ केसेस लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड माय डियर, एंड एज पर Archimedes principle, buoyant force acting on a body which is always in the upward direction my dear is equal to weight of liquid displaced is equal to weight of liquid डिस्प्लेसर। ये मुझे थोड़ा चाहिए बेटा इस कॉन्सेप्ट में, दैट्स वाई मैंने थोड़ा इसको रिकॉल किया बेटा। नंबर 1 व्हाट इज बायोंट फोर्स, नंबर 2 हाउ टू कैलकुलेट बायोंट फोर्स, एंड फ्रॉम द आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिस बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टर्मिनल वेलोसिटी माय डियर। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा बेसिक्स भी रिमाइंड करो बेटा। आई मस्ट रिकॉल यू माय डियर when we talk about what we called as Gubernoon constant velocity, अगर किसी सिचुएशन में आपकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, दैट इट इंप्लाइज गुबरनून जो आपकी एक्सेलरेशन है वो जीरो है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, द एसेंशियल कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जीरो एक्सेलरेशन इज दैट कि जो बॉडी पे नेट फोर्स होगा बेटा वो जीरो होगा बेटा। नाउ सपोज एक कंटेनर को मैं लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एक कंटेनर को मैं लेता हूं बेटा, दिस इज द कंटेनर फॉर वी पीपल। इस कंटेनर में कोई फ्लूइड में लेता हूं बेटा, सपोज वाटर की ही बात करते हैं बेटा, द मोस्ट फेमस एंड द कॉमन वन फॉर वी पीपल। ओके बेटा, इस कंटेनर को लेते हैं बेटा, इसमें आपने एक विस्कस लिक्विड लिया बेटा, ये विस्कस मीडियम है बेटा यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं एक बॉडी को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ बेटा, सपोज मैं एक स्फेरिकल बॉडी को बेटा रिलीज कर रहा हूँ बेटा, दिस इज द स्फेरिकल बॉडी फॉर यू पीपल। लेट अस स्टडी द मोशन ऑफ दिस, लेट्स हैव द पोजीशन ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी ओवर हियर एट सम इंस्टेंट माय डियर। अब सुनिए बेटा आराम से, पहले व्हाट माय टर्मिनल वेलोसिटी इज, देन वी विल बी हैविंग द एक्सप्रेशन फॉर दिस टर्मिनल वेलोसिटी। एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न माय डियर, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, और मे बी बेटा उस एक्सप्रेशन से ही बेटा बाद में आप देख सकते हो डिपेंडेंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये किस पे डिपेंडेंट है। लिसन टू मी माय डियर, जब बेटा इस बॉडी को मैं विस्कस मीडियम में लूंगा बेटा, अगर इस बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस की हम बात करेंगे बेटा, मैं यहां पे इस बॉडी की बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा बेटा, ये ऑलरेडी डन फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस। फोर्स नंबर 1 फॉर यू पीपल, दैट्स गुबरनून, द वेट ऑफ द बॉडी दैट्स गिवन बाय mg। फोर्स नंबर 2 फॉर यू पीपल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बायोंट फोर्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था बेटा। नाउ you are having the moving body, in the viscous medium। ये जो medium है बेटा, ये viscous medium है, means इसका कुछ ना कुछ नॉन जीरो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो बेटा जब आप इस बॉडी को इस विस्कस मीडियम में ले रहे हो बेटा, यू आर हैविंग द मूविंग बॉडी, यू आर हैविंग द बॉडी इन मोशन इन द विस्कस मीडियम, इसका कुछ न कुछ बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट इस बॉडी पे एक फोर्स एक्ट होगा जो इसकी मोशन को अपोज करेगा बेटा, जिस फोर्स को हमने नाम दिया विस्कस फोर्स, जिसको हमने बेटा कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द स्टोक्स लॉ, एंड दैट फोर्स ओपोजेस द मोशन। अगर बॉडी बेटा नीचे आ रही है बेटा, तो वो फोर्स आपको मिलेगा इन द अपवर्ड direction, that's viscous force, that is FV my dear। और गुबरनून जब ये बॉडी नीचे आती है बेटा, इनसाइड द फ्लूइड बेटा, when it was outside the acceleration was equal to acceleration due to gravity, it was the case of the freely falling body। now it is inside the fluid my dear, inside the fluid, inside the liquid। अब बेटा दो forces इसको oppose कर रहे हैं बेटा, force number 1 it is buoyant force, that's in the upward direction, and the force number 2 that's the viscous force due to the viscous nature of the medium my dear। so इसकी बेटा फिर भी कुछ ना कुछ acceleration होगी बेटा, बॉडी नीचे आ रही है बेटा, इसकी कुछ ना कुछ acceleration होगी, however that acceleration A will be less than the acceleration due to gravity, लेकिन फिर भी motion जो है वो accelerated है। Now listen to me my dear, if we talk about the buoyant force,
The buoyant force is given by weight of liquid displaced. If we talk about the weight, that's given by mg. लेकिन जो आपका विस्कस फोर्स है बेटा, the expression, I will highlight different forces. Force number 1, that is the Fb, that is the buoyant force, that is equal to mg, that is the, or I can say it is weight of, I should say, liquid displaced, weight of liquid displaced, my dear. And as far as the weight of the body is concerned, that is simply mg. Now as far as the viscous force is concerned, that is given by Fv, that is the viscous force is given by 6 pi eta Vr. That's from the Stokes law, my dear. And from here you can see important thing, that is the dependence of the viscous force or the velocity of the body. बेटा बॉडी की जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है. इवन इफ द एक्सेलरेशन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि बॉडी की फिर भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. हे माय डियर, अगर बॉडी की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, इसकी जो वेलोसिटी विथ टाइम बेटा वो बढ़ेगी बेटा. अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा बेटा. अभी बॉडी की मोशन जो है एक तो डाउनवर्ड है ही, और दूसरी बेटा इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मींस बॉडी पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आराम से सुनना बेटा, आराम से सुनना बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू पीपल. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर बॉडी माय डियर. डाउनवर्ड फोर्स mg, then upward force buoyant force, what you call as up thrust, and one more force due to the viscous nature of the medium, that is your viscous force my dear. अब बेटा जब बॉडी नीचे आती है, इसकी अभी भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, इवन इफ दैट एक्सेलरेशन is less than acceleration due to gravity, लेकिन फिर भी बेटा इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. अब बेटा अगर इसकी एक्सेलरेशन है in the downward direction, I will say the net force is in the downward direction, or I should say mg is dominant over buoyant force and viscous force बेटा. तभी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा. लेकिन इन दो फोर्सेस में बेटा, जो अपवर्ड दो फोर्सेस है, इनमें एक फोर्स है विस्कस फोर्स बेटा. द फोर्स इज टिपिकली द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, एंड यू आर हैविंग द एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जितनी बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ेगी बेटा, उतना ही विस्कस फोर्स जो है ये बढ़ेगा बेटा. और गुबरम्योन एक इंस्टेंट हमें ऐसा मिल रहा है जब विस्कस फोर्स जो है बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड इतना सफिशिएंट होता है, और ये फोर्स और बायंट फोर्स मिला के बिल्कुल इस mg को बैलेंस कर रहे हैं, इस mg को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इस mg को किल कर रहे हैं बेटा. और उस वक्त कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, हे माय डियर, एक इंस्टेंट ऐसा मुझे मिला जब बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स बेटा, जिनकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, सो इन दो का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो का जो नेट होगा बेटा, वो अपवर्ड है. एक इंस्टेंट मुझे ऐसा मिलता है कि जब विस्कस फोर्स जो है ऐसा वैल्यू अटेन करता है. कैसे इसका वैल्यू बढ़ जाता है? बिकॉज द विस्कस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. द मोशन इज एक्सेलरेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी बढ़ने से बेटा आपका जो विस्कस फोर्स है बेटा, या विस्कस ड्रैग जो है बेटा, वो बढ़ जाता है बेटा. एक इंस्टेंट ऐसा हमें मिलता है जब ये विस्कस फोर्स जो है बेटा, ये इतना सफिशिएंट बनता है कि विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स का जो रिजल्टेंट है, इन दो का जो नेट या इफेक्ट है बेटा, वो बिल्कुल mg को बैलेंस करता है बेटा. हे माय डियर, जब वो mg को बैलेंस करेगा बेटा, जो बॉडी पे नेट फोर्स होगा बेटा वो जीरो बनेगा. जब नेट फोर्स जीरो होगा बेटा, बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो जीरो बनेगी. अगर एक्सेलरेशन जीरो बनेगी बेटा, बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इन द विस्कस मीडियम इज व्हाट वी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. सो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन what my terminal velocity is, answer number 1 or your statement number 1 will be, hey, it's the constant velocity. अब ये constant velocity कैसे बनती है बेटा, ये analysis हमने देखी बेटा. I will repeat once more but in the minimum possible time. थोड़ा मैं जल्दी बोलूँगा बेटा. हमने बोला एक बॉडी को विस्कस मीडियम में ले लो बेटा. You are having the moving body, you are releasing it from some height. और मैं कंडीशन यही से दे रहा हूँ बेटा कि सपोज बॉडी की जो डेंसिटी है बेटा वो लिक्विड से ज़्यादा है, तभी तो बॉडी बेटा सिंक हो जाएगी बेटा, तभी तो बॉडी बेटा नीचे जाइए बेटा. एज फार एज द लॉज ऑफ फ्लोटेशन इज कंसर्न, वो मैं यही से बोल रहा हूँ, बॉडी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है बेटा. नाउ इफ यू विल रिलीज द बॉडी व्हेन इट इज आउटसाइड द फ्लूइड, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब ये फ्लूइड के अंदर जाएगी बेटा, एक तो ऑलरेडी इस पे डाउनवर्ड फोर्स है, दैट इज mg, और एक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू द फ्लूइड, व्हाट वी कॉल एज बायंट फोर्स माय डियर, और अप थ्रस्ट. अब
अब बेटा बॉडी मोशन है, एंड वेन एवर यू आर हैविंग द मूविंग बॉडी इन द विस्कस मीडियम, जो मीडियम हमने लिया बेटा वो विस्कस है, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेटा दैट इज टिपिकली गुबरम्यून नॉन जीरो माय डियर। सो विस्कस मीडियम में बात चल रही है बेटा, तो और एक फोर्स लाइव हो जाता है, एक और एक फोर्स एक्टिवेट हो जाता है बेटा। दैट फोर्स फॉर यू पीपल इज विस्कस फोर्स व्हिच इज गिवन बाय 6 पाई eta VR as far as the Stokes law is concerned, my dear. And the important thing about the viscous force is that the force is function of velocity. Hey my dear, the motion is still accelerated even if that acceleration is less than the acceleration due to gravity because of the buoyant force and the viscous force, my dear. लेकिन फिर भी motion accelerated है। अगर motion accelerated है it means जो बॉडी है बेटा वो नीचे जाती है बेटा विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। उस इंक्रीजिंग वेलोसिटी से बेटा मेरा विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ेगा बेटा, और एक इंस्टेंट आपको ऐसा मिलेगा बेटा जब विस्कस फोर्स और बायोंट फोर्स जो है ये दोनों मिला के बेटा इनका जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल mg या वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, किल करेगा बेटा। तो उस वक्त नेट फोर्स बॉडी पे जीरो होगा। जब नेट फोर्स जीरो होगा बेटा इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। जब एक्सेलरेशन जीरो मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट velocity is what we called as terminal velocity. Now I should say Gubernian the definition of the terminal velocity. मैं बोलूँगा बेटा the constant velocity attained by body in a viscous medium is called terminal velocity. So this is about the qualitative treatment of the, I should say, terminal velocity. That is nothing but the constant velocity. Now let's have the expression for this terminal velocity, my dear. I will write expression for terminal velocity. Listen to me, my dear. This is the body for we people, the body in the viscous medium. और अगर हम different forces की बात करेंगे बेटा इस पे, force number 1 that's mg, that's the weight of the body. Force number 2 for you people, that is Fb, that's the buoyant force, and you are having one more force in the opposite direction, that is Gubernian, what we call as viscous force. ख्याल रखिएगा बेटा, buoyant force is always acting in the upward direction, that's why the name of thrust, and your viscous force depends on the motion of the body in the viscous medium, my dear. अगर आपके पास बेटा आपकी हेल्प के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसी सिचुएशन कभी कभार मिल रही है बेटा, आपके पास एक बॉडी है बेटा, बॉडी की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम है, ऑब्वियसली ये फ्लोट हो जाएगी बेटा। तो सपोज बेटा आप हाथ से इसको नीचे ले जा रहे हो बेटा, जब आप इसको नीचे ले जा रहे हो बेटा, सपोज बॉडी अब यहाँ को पहुंची, नाउ इफ़ यू विल रिलीज इट, अब बॉडी खुद ब खुद ऊपर आनी चाहिए बेटा, उस वक्त विस्कस फोर्स की डायरेक्शन जो है बेटा वो डाउनवर्ड होगी। इन जनरल द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अपोजेस इट्स मोशन। ओके, नाउ लेट्स हैव द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, माय डियर। मैंने डिफरेंट फोर्सेस को लिया बेटा, मैं बोलूँगा बेटा when it is the situation of terminal velocity, जब terminal velocity की means उस instant की बात चलेगी when we are talking about terminal velocity, my dear. पहली बात तो ये है बेटा, the terminal velocity it is nothing but the constant velocity. अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इट इंप्लाइज द एक्सेलरेशन इज जीरो एंड इट इंप्लाइज द एफ नेट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो. अगर बेटा एफ नेट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन द अपवर्ड फोर्स हैज टू बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स. सो आई विल राइट Gubernian FB, that's the buoyant force, plus viscous force, that's FV, is equal to mg, that is the weight of the body. I will write that's mg, where mg is nothing but weight of body. अब क्या करना है बेटा, यहीं पे buoyant force का वैल्यू पुट करो और viscous force का, then rearrange the equation, you will get the, I should say, expression for the terminal velocity. Now listen to me, my dear. As far as the buoyant force is concerned, from the Archimedes principle, my dear, buoyant force is equal to weight of liquid displaced, और weight होता है mg के बराबर बेटा. So I will write Gubernian, when I will go for buoyant force is equal to weight of liquid displaced. So I will write that is given by mass of liquid displaced multiplied by acceleration due to gravity. फिर बेटा आपको पता है बेटा density
density of liquid can be written as mass of liquid divided by volume of liquid. I'm just using the basics. Density is given by mass per unit volume, लेकिन लिक्विड की बात चल रही है बेटा. नाउ अगर आप यहाँ से बेटा mass of liquid निकालने की कोशिश करोगे by rearranging the equation, it is density of liquid into volume of liquid, my dear. फिर मैं बोलूँगा बेटा as the body is completely immersed in a liquid, so अगर मैं इस body को spherical मानूंगा with the radius r, जब body बेटा completely immersed होगी, then the volume of liquid displaced will be equal to the volume of body. So I can put it as mass of liquid displaced is equal to density of liquid जो displace हुआ बेटा multiplied by volume of liquid की जगह मैं लूँगा बेटा volume of body. As the body is completely immersed, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा body जो हमारी है बेटा वो completely immersed है. जब बेटा body completely immersed है, then the volume of liquid displaced is equal to the volume of body जिसको आपने पानी में लिक्विड में लिया बेटा. So that is completely immersed in this case. इस रिजल्ट को आप मैथ्स में भी कभी कभार 10th में शायद यूज करते हो बेटा in the chapter mensuration, in the chapter surface areas and volumes. So mass of liquid हमें ये मिला बेटा. अगर हम यहाँ से बेटा buoyant force की एक्सप्रेशन अब देखेंगे बेटा, the buoyant force, the expression for buoyant force which was ml into g, ml हमें मिला बेटा density of liquid into volume of body into साथ में बेटा आपको है acceleration due to gravity. In fact, you can put it as FB, buoyant force, density of liquid as such that is rho L, volume of body. मैं body को spherical मानता हूँ बेटा. Volume of sphere is 4/3 pi r cube, where r is the radius of that spherical body. साथ में acceleration due to gravity that is g. दूसरा force आपका है बेटा viscous force that is F v Gobernon from the Stokes law that is given by 6 pi eta v r. और ख्याल रखिएगा बेटा ये v ही हमारी बेटा होगी terminal velocity, क्योंकि मैंने जो कंडीशन यहाँ पे ली बेटा मैंने फोर्सेस को इक्वेट किया, मींस इट्स गोइंग टू बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी, मींस द नेट फोर्स इज जीरो माय डियर. सो द वेलोसिटी हियर इट इज गोइंग टू बी द टर्मिनल वेलोसिटी. एंड एज फार एज mg is concerned my dear, it is mass of body into acceleration due to gravity. I can write down government job का weight है बेटा that is given by mg, that is mass of body into acceleration due to gravity. Mass can be again expressed as density into volume. I will write the weight is given by mass of body that is density of body my dear into volume of body that is spherical that is 4/3 pi r cube और साथ में acceleration due to gravity. These are the three forces for you people. This is the buoyant force, this is the viscous force and this is the weight for you people. अब तीनों का वैल्यू पुट करो बेटा इस एक्सप्रेशन में, then try to simplify it, you will get the answer. So I will put the values of all the three forces in the expression. The expression for V people, I want to write it again. Buoyant force plus viscous force is equal to weight of body immersed my dear. That's W my dear, or WT जो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा. Okay, चलो WT ही रखते हैं बेटा, no problem at all. Now what I will do, मैं इक्वेशन को पहले rearrange करूँगा बेटा. I will write FV, that the viscous force is equal to weight minus buoyant force. इसको यहाँ पे ट्रांसफर करके बेटा viscous force, what is that? That is 6 pi eta v r is equal to, ये है बेटा viscous force 6 pi eta v r. और इसी तरह बेटा weight of the liquid that is given by weight of the body that's given by density of the body यहाँ पे है बेटा, then followed by 4/3, then pi, then r cube, then g my dear, r cube then g minus your buoyant forces density of liquid, it is 4/3, it is pi, it is r cube into g. अब आप देखो बेटा क्या क्या कैंसिलेशन में कर सकता हूँ बेटा, आराम से देखना. चलो मैं फिलहाल ऐसे ही रखूँगा बेटा. I will write 6 pi eta v r is equal to, देखो मैं क्या कॉमन निकालूंगा बेटा यहाँ पे. एक तो मैं 2 को कॉमन निकालूंगा बेटा 2. चलो 3 को भी कॉमन निकालते हैं बेटा डिनोमिनेटर में 2/3. देखो बेटा आराम से क्या क्या बचेगा यहाँ पे. इनफैक्ट मैं g को भी कॉमन निकालूंगा बेटा. यहाँ पे सुनना बेटा आराम से जरा. यहाँ क्या बचा बेटा, एक तो बचा डेंसिटी ऑफ बॉडी, मैंने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बेटा 2 बचा आपका. ओके क्योंकि ये 4 था, 2 को बाहर निकाला. और मैं यहाँ पे पाई को भी बाहर निकालूंगा बेटा, पाई भी बाहर आया. और एक r को भी निकालूंगा बेटा बाहर, तो यहाँ पे बचा बेटा आपका r² माय डियर. आराम से देखिएगा बेटा मैंने क्या क्या कॉमन निकाला. फर्स्ट इट वाज डेंसिटी ऑफ बॉडी, दैट डेंसिटी ऑफ बॉडी इज हियर, दैट डेंसिटी ऑफ बॉडी इज हियर, दैट डेंसिटी ऑफ बॉडी इज हियर. डेंसिटी ऑफ बॉडी यहाँ पे है बेटा. फिर यहाँ पे 4 था, 2 बाहर, 2 यहाँ पे, 2 2 और 4.
पाई वो भी बाहर आ चुका है बेटा, इट वॉज आर क्यूब, इट इज आर हेयर एंड आर स्क्वायर हेयर, और जी को भी बाहर निकाला बेटा और 3 को भी बाहर निकाला, माइनस यहाँ पे बचा डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो एल, 3 बाहर आ चुका है, 4 में 2 बाहर आ चुका है तो 2 यहाँ पे रहेगा बेटा, पाई भी बाहर आ चुका है, आर क्यूब में आर स्क्वायर बचेगा और जी भी बाहर आ चुका है। नाउ गो फॉर द कैंसिलेशन माय डियर, आई विल राइट 2 1 आर यहाँ पे बेटा, 2 1 आर एंड 2 3 आर माय डियर, इसी तरह पाई और पाई कैंसिल और इसी तरह आर और आर कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ माय डियर 3 ईटा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बचा बेटा आपका, नाउ मैं और एक चीज कॉमन निकालूंगा बेटा, मैं 2r स्क्वायर को भी कॉमन निकालूंगा, ये है 2r स्क्वायर और साथ में बेटा g है और डिवाइड में 3 है बेटा, यहाँ पे बचा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड माय डियर, और नाउ फाइनली द एक्सप्रेशन फॉर द आई शुड से टर्मिनल वेलोसिटी, दिस v is equal to my dear, this v is equal to my dear that is given by 2r square into g into density of body minus density of liquid divided by 3 और eta को नीचे लाओ तो ये बनेगा 9 into eta. This is the expression for your terminal velocity. It's 2r square g into density of body minus density of liquid divided by 9 times eta. And I must tell you one more thing my dear, जो कि यहाँ पे ही आप यूज नहीं कर सकते बेटा, बेटा कोई भी एक्सप्रेशन जब आप डिराइव करते हो बेटा, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा, then you can go for the technique of dimensional analysis that what we call as majority of the equations are dimensionally correct. अगर आप इसी तरह इस इक्वेशन को भी चेक करोगे बेटा, you will find it dimensionally correct my dear. This is the expression for I should say Gouvernement the terminal velocity. You can see it depends on the densities of the two, that is the liquid as well as the body which you are immersing. It depends on the radius of the body which is moving inside the viscous medium, and at the same time my dear it depends on the coefficient of viscosity of that medium. It's going to be our journey towards the types of flow. जहाँ तक फ्लो की बात है बेटा, फ्लूइड फ्लो की बात है बेटा, द फ्लूइड फ्लो इज ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 is what we call as streamline, yeah, it is also termed as laminar flow, and number 2 is what we call as turbulent flow. Now let us start with the streamline or laminar flow my dear. जब मैं लैमिनर फ्लो की बात करता हूँ बेटा, द टर्म इटसेल्फ सेज, जब हम लैमिना की बात करते हैं बेटा, आपने ऑलरेडी बेटा टर्म लैमिना सुनी होगी इन द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, जहाँ पे आप बेटा थॉर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो बेटा. देयर इज द थ्योरम व्हाट वी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ शीट्स और थ्योरम ऑफ लैमिना. वहाँ पे आप बोलते हो बेटा द थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द आई शुड से ऑब्जेक्ट्स जिनकी थिकनेस बेटा नेग्लिजिबल होती है, और आई कैन से फॉर द ऑब्जेक्ट्स फॉर द शीट्स और फॉर द लैमिना Gouvernement. जब मैं बेटा स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो की बात करता हूं बेटा, इन लैमिनर फ्लो हम बोलते हैं बेटा लैमिना स्टैंड्स फॉर शीट. दिस टाइप ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ शीट्स Gouvernement. दिस इज द वेरी फर्स्ट और द बेसिक पॉइंट एज फार एज द स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो इज कंसर्न. उसके बाद हम क्या बोलते हैं बेटा कि व्हेन ए लिक्विड फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड चैनल लाइक पाइप, द फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ शीट्स या लेयर्स, सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो. और फिर लैमिनर फ्लो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, no molecule jumps from one layer to another. This is one of the characteristic of your laminar flow कि एक मॉलिक्यूल के लिए बेटा, जो कि आगे आएगा बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए जो आई शुड से पाथ या स्ट्रीम लाइन है बेटा, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है बेटा इन केस ऑफ स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो. सो नो मॉलिक्यूल जम्प्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर. नेक्स्ट पॉइंट इज द पाथ फॉलोड बाय मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड. जो पाथ बेटा एक मॉलिक्यूल फॉलो करता है, उस पाथ को हम नाम देते हैं बेटा स्ट्रीम लाइन. दिस स्ट्रीम लाइन कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी कर्व्ड माय डियर, एंड देयर इज सिंगल स्ट्रीम लाइन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू ईच molecule. एक मॉलिक्यूल के लिए बेटा सिंगल स्ट्रीम लाइन होती है बेटा. द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वी पीपल. This is going to be the important point for we people. The velocity is constant both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. जब velocity की बात आती है बेटा, the velocity is constant in magnitude and direction as far as the streamline or laminar flow is concerned. The different streamlines are parallel to each other. और इसके साथ साथ बेटा जब हम laminar flow की बात करते हैं बेटा, there are few more points my dear. Number 1 is no two streamlines can intersect. दो streamlines बेटा intersect नहीं करती है बेटा as far as the streamline or laminar flow is concerned. A bundle of streamlines is called tube or pipe. A bundle of streamlines is called tube of flow. Okay, sorry, it's not tube of pipe, it's tube of flow. उसके बाद बेटा जो laminar flow
एक फ्लूइड का रहता है बेटा, या लैमिनर फ्लो जो होता है बेटा, ये सिर्फ होता है अप टू सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट वी कॉल्ड एज गवर्नमेंट क्रिटिकल वेलोसिटी. तो मैं बोलता हूं बेटा, द फ्लो रिमेन स्ट्रीमलाइन और लैमिनर बिलो a certain value of velocity called critical velocity. And once बेटा आपकी velocity अगर बढ़ जाती है बेटा, या इस critical velocity को exceed या cross करती है बेटा, beyond this the flow becomes turbulent. उसके बाद बेटा अगर turbulent flow की आप बात करोगे बेटा, the flow is not in the form of sheets. This is the first point of comparison between the turbulent and the streamline flow. When you deal with the streamline or the laminar flow, the flow is in the form of sheets. लेकिन जब हम बेटा turbulent flow की बात करते हैं बेटा, the flow is not in the form of sheets. और इसी तरह बेटा, this type of flow is characterized by irregular movement of molecules. In case of streamline flow बेटा, एक molecule के लिए जो path था वो confined था, लेकिन यहाँ पे इस flow में बेटा, this type of flow is characterized by irregular movement of molecules or particles of the fluid, or we can say molecules are not confined to single layer, while as in case of, I should say, streamline or laminar flow, molecules are confined to single layer, my dear. The different molecules of liquid show different velocities. In case of streamline, or I should say laminar, the velocity was constant or same both in magnitude and direction, but here the velocity is different, my dear. The velocity may have any value which is generally beyond certain limit called critical velocity. In case of turbulent flow, my dear, जो velocity होती है बेटा, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से बेटा ज़्यादा होती है बेटा, एंड टर्बुलेंट फ्लो टेक्स प्लेस एट हाई वेलोसिटीज, माय डियर. टर्बुलेंट फ्लो जो होता है बेटा, वो नॉर्मली बेटा, वो उसके लिए जो कंडीशन है बेटा, दैट्स द वेलोसिटीज शुड बी हाई एंड लो फ्लूइड विस्कोसिटी. दीज आर द इम्पॉर्टेंट, आई शुड से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच फेवर turbulent flow. Number 1 is high velocity and number 2 is fluid viscosity. Okay. Let's have something or some lines about critical velocity. Critical velocity. हमने देखा बेटा, the flow is of two types. Number 1 is your, I should say, streamline or laminar, and number 2 is your turbulent. Beta, when the velocity is, I should say, less than or below this velocity, what we call as critical velocity, the flow is streamline, and once the velocity exceeds this velocity, critical velocity, the flow is turbulent. मैं बोलूँगा बेटा about critical velocity, हम बोलेंगे बेटा the flow is streamline. The flow is streamlined up to some specific value of velocity. Beyond this, that is beyond this velocity, beyond this, flow becomes turbulent. Beyond this, flow becomes turbulent. This specific velocity, ये जो स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है बेटा, जिसके जब आपकी वेलोसिटी इस स्पेसिफिक वेलोसिटी से कम होती है बेटा, देन द फ्लो इज लैमिनर. और जब बेटा आपकी वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, व्हेन इट इज ग्रेटर देन दिस स्पेसिफिक वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल एज क्रिटिकल वेलोसिटी. दिस स्पेसिफिक वेलोसिटी is called critical velocity. चलो बेटा, for mathematical treatment, let us suppose you are having a cylindrical tube with the diameter that's d. So मैं लिखूंगा बेटा, consider a fluid flowing through a narrow pipe
through a narrow pipe of diameter d. Now as far as the critical velocity is concerned, I will say from experiments, the critical velocity V is the function of coefficient of viscosity of the fluid. The critical velocity V is the function of the density of the fluid, and the critical velocity V is the function of the diameter of the tube through which fluid is flowing. Now my dear, it's your job, you can go for it. You have to derive the expression for the critical velocity. You are going to use the dimensional analysis, one of the application my dear. You will start your analysis with V is proportional to coefficient of viscosity raised to power A, V is proportional to density raised to power B, V is proportional to diameter raised to power C. जब बेटा आप इस प्रॉब्लम को इस एनालिसिस को करोगे बेटा, you will end with the result that is the expression for critical velocity. This critical velocity is given by K eta divided by d into rho, where K is the proportionality constant here, eta is the coefficient of viscosity my dear, and d is the diameter, and rho is the density of the liquid, where K my dear here, this K is just a number, implies it is Gubermian unitless. It is unitless plus dimensionless, and this K is called Reynolds number. What is the significance of this Reynolds number my dear? Its value decides my dear कि जो fluid है वो turbulent होगा वो streamline होगा बेटा. So it is a number जिसका value decide करता है कि जो flow है बेटा वो streamline है या turbulent है. And the situation is like this बेटा, अगर K का value जो है, if it is less than Gubermian 2000, or I can say between 0 and 2000, जो उस वक्त बेटा flow होता है fluid का बेटा, that is Gubermian streamline, वो streamline होता है बेटा. And अगर Reynolds number जो बेटा है, अगर इसका value होगा greater than Gubermian 3000, then the flow is Gubermian turbulent. The flow is Gubermian turbulent. और अगर बेटा Reynolds number का जो value है बेटा, if it is Gubermian greater than 2000 but it is less than Gubermian 3000, or I should say if the value lies between 2000 and 3000, हम बोलते हैं बेटा the fluid flow is unstable, it changes back and forth from streamline to turbulent. हम बोलेंगे बेटा for this case my dear, the fluid flow is unstable. The fluid flow is unstable. It changes back and forth. It changes back and forth from streamline to turbulent. I was saying that this quantity, what we call as Reynolds number, its value decides whether the flow is streamline or turbulent. हमने बोला बेटा if K is less than 2000, or I can say if K lies between 0 to 2000, the flow is streamline. और अगर K का value बेटा 3000 से ज़्यादा है, the flow is turbulent. And if K lies between 2000 and 3000 my dear, the fluid flow is unstable. It changes back and forth from streamline to turbulent. And also you can have the expression for Reynolds number, that's K is equal to V into D into rho upon eta. This is your velocity, you call it as average velocity, or if it is the case of critical velocity, then the corresponding K is called critical Reynolds number. D is the diameter of the tube, rho is the density of the fluid, and eta is the coefficient of viscosity. Okay, let's move onwards my dear. The next topic for we people is one of the important one, what we call as equation of continuity. Equation of continuity. Equation of continuity. Suno beta. As far as the equation of continuity is concerned, about equation of continuity मैं एक daily life observation आपको बोलूँगा बेटा. That is कि अगर आप बेटा कभी कभार देखोगे कि किसी पाइप के थ्रू पानी जा रहा है या कोई फ्लूइड जा रहा है बेटा,
फिर आप वो पाइप हाथ में लेते हो और आपको किसी को पानी फेंकना होता है, लेकिन जो पाइप से पानी जो बाहर आ रहा है बेटा, उसका रेंज उतना काफी नहीं होता है कि वो पानी बराबर उस बंदे तक पहुंच जाए। फिर आप क्या करते हो बेटा, आप अपनी उंगली को उस पाइप में भरते हो बेटा। उसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो रेंज है उस पानी का बेटा वो बढ़ जाता है। इट मींस यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग द एरिया, और उस एरिया डिक्रीज करने की वजह से बेटा वेलोसिटी जो लिक्विड की है वो बढ़ जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा बेटा, जो फायर सर्विस वाले जब बेटा कभी कभार कहीं पे आग लगती है बेटा, फिर जब उनको बेटा उस आग को बुझाना होता है बेटा, पाइप उनकी जो होती है बेटा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छा खासा होता है बेटा, लेकिन एंड पे बेटा वो नोजल वहां पे फिट करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत कम होता है बेटा। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से बेटा जो पानी की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है बेटा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्चुअली सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द वेलोसिटी दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इन सम सिचुएशन माय डियर, इन सम आई कैन राइट माय डियर, it is actually government the product of area and the velocity that remains government constant। कि अगर किसी केस में बेटा आप एरिया को डिक्रीज करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है बेटा, या अगर आप बेटा एरिया को इंक्रीज करोगे वेलोसिटी कम हो जाएगी बेटा। सो आई कैन से माय डियर, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड, during the motion of fluid, or I will prefer government liquid, or you can have the general term fluid. During the motion of fluid, if there is reduction, if there is reduction in area, then velocity increases, and I will write vice versa, कि अगर आप इसका उल्टा करोगे बेटा, if you will increase the area the velocity will decrease। it is actually the consequence when I'm saying government equation of continuity government, or this mathematical form of it, that the product of area and the velocity is constant, it is actually the consequence, or it is a result. I will say government, this equation of continuity is the result of law of conservation of mass, law of conservation of mass। it implies अगर आपके पास कोई ट्यूब है बेटा, कोई पाइप है आपके पास बेटा, सपोज मैं यहां पे एक पाइप बनाऊंगा बेटा, ये पाइप का एक एंड, देन आई विल शो देयर इज वेरिएशन, और आई शुड से द चेंज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया माय डियर। अगर यहां पे मानूंगा मैं बेटा, सपोज एरिया जो है वो A1 है बेटा, और यहाँ पे जो एरिया है बेटा A2 है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विच इज गोइंग इन इज V1, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विच इज कमिंग आउट दैट इज गोइंग ऑन V2। आई वाज सेइंग दैट इट इज द रिजल्ट, और इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप बेटा यहाँ पे एरिया कम करते हो तो वेलोसिटी बेटा लिक्विड की बढ़ जाती है, एंड दैट शुड happen my dear, because किसी पर्टिकुलर टाइम में, सपोज इन सम पर्टिकुलर टाइम, लेट अस सपोज दैट इज डेल्टा t, और इन t सेकेंड्स, इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, जितना फ्लूइड यहाँ से इन होगा बेटा उतना ही फ्लूइड बेटा बाहर आना चाहिए ना। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे एरिया कम होता है बेटा, तो अगर आप चाहते हो कि उतना ही फ्लूइड, उतना ही लिक्विड बाहर आए, तो उसके लिए वेलोसिटी का बढ़ जाना जो है वो जरूरी है बेटा। सो इट इज एक्चुअली गवर्नमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नहीं कि बेटा कुछ लिक्विड यहाँ से अंदर जाए और यहाँ से लिक्विड कुछ जो बाहर आए वो कम हो बेटा, और ना ही बेटा कुछ लिक्विड यहाँ से अंदर जाए और यहाँ से लिक्विड ज़्यादा बाहर आए, नहीं बेटा। हेयर द एरिया इज रीजनेबल, और आई शुड से यहाँ पे एरिया ज़्यादा है बेटा, तो फ्लूइड अंदर जा रहा है बेटा विथ सम वेलोसिटी v। फिर यहाँ पे देयर इज द रिडक्शन इन द एरिया, लेकिन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास इन सम टाइम, अगर कोई टाइम इंटरवल आप सिलेक्ट करते हो बेटा, जितना फ्लूइड यहाँ से इन होना चाहिए उतना ही फ्लूइड बेटा बाहर आना चाहिए बेटा। दैट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्रॉम दिस सिचुएशन। नाउ लेट्स हैव द डेरिवेशन ऑफ दिस रिजल्ट, और आई शुड say the proof of this result, that the product of area and velocity that should remain constant। I will start my proof government like this। Listen to me my dear, मैंने यहाँ पे एक पाइप बेटा हाईलाइट की, यहाँ पे मैं मानूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया A1, the velocity with which the liquid is going in is V1, और यहाँ पे the velocity with which the liquid is coming out is V2, और यहाँ पे एरिया A2। I call this as government, मैं इस वाले एंड को नाम दूंगा बेटा End1, मैं इस वाले एंड को नाम दूंगा बेटा N2, और यहाँ पे जो लिक्विड की डेंसिटी है बेटा वो रो
1 है और यहाँ पे जो लिक्विड की डेंसिटी है बेटा वो ρ2 है बेटा. Now as far as the proof or the derivation of this result, that is equation of continuity, that is the product of the area and velocity, that should remain Gubernoon constant. Let's have the proof, or I should say the derivation. मैं बोलूँगा बेटा, I will start my proof like this. Distance traveled by fluid, distance traveled by fluid at end 1 in time. Suppose हम time interval जो select करेंगे that is delta t. Now it is distance traveled. Fluid ने कितनी distance travel की बेटा? At end 1 in time delta t. जब हम distance की बात करते हैं बेटा, from the basics of the kinematics, your distance is expressed as the product of speed and time or velocity and time. So यहाँ पे end 1 की अगर बात करेंगे बेटा, यहाँ पे velocity v1 है. So I will write it is equal to v1 into time, that is delta t. So distance traveled by fluid at end 1 in time delta t is given by speed into time. I am just using the basics of the kinematics, my dear. That's actually speed into time or velocity into time. Then I will go for Gubernoon. Mass of liquid entering at end 1 in time delta t. Let's call that mass as Gubernoon m1. जो mass बेटा enter होता है at end 1 in time delta t. Now mass is expressed as the product of density and volume. So I will say at end 1 the density is ρ1. Suppose beta the volume at end 1, or I should say the volume of liquid which is entering, I call this as Gubernoon v1, or I can write Gubernoon, it is m1 is equal to ρ1. Now the volume is the product of three lengths. दो lengths आएगी बेटा area में. The area at end 1 is Gubernoon a1, multiply हो जाएगी auric distance. That distance is Gubernoon given by v1 into delta t. In fact I should write for volume as v dash in order to avoid confusion between the velocity and the volume, my dear. Again मैंने बोला distance traveled by fluid at end 1 in time delta t. You express your distance as product of velocity and time. That is v1 into delta t. फिर mass of liquid entering at end 1 in the same time, that is delta t. Mass is expressed as product of density into volume. Your v1 is the volume of liquid entering at end 1. In fact v1 dash Gubernoon. फिर मैंने बोला m1 ρ1 as such, volume is expressed as product of three lengths, my dear. दो lengths आती है बेटा एरिया में. यहाँ पे एरिया जो है वो a1 है बेटा. फिर और एक लेंथ या जो डिस्टेंस है बेटा, that is v1 into delta t. That's v1 into delta t. इसी तरह बेटा मैं लिखूंगा बेटा यहाँ से बाद में Gubernoon. Distance traveled by fluid at end second की अब बात चलेगी बेटा, या end2 Gubernoon in same time delta t is equal to, again I will express my distance as the product of speed and time. So the speed at or the velocity at the end2 is v2 and the time interval is the same, that is delta t. You have distance traveled by fluid at end2 in same time, that is delta t. Now I will go for mass of liquid, या mass of fluid, mass of liquid leaving at end 2 in time delta t. Again I call that mass as m2, which is expressed as product of density and volume. Density में मानूंगा बेटा ρ2 वहां पे है और वहां पे वॉल्यूम हम मानेंगे v2 dash, that is the volume of liquid coming out in the time delta t. Or I can write m2 is equal to ρ2 v2 dash, that is the volume. Volume is again expressed as product of three lengths. दो lengths आई एरिया में, वहां पे एरिया है a2 बेटा, और तीसरी लेंथ that is the distance Gubernoon, और वो distance है बेटा v2 into delta t. This is your Gubernoon m1, that is the mass of liquid going in the time delta t, and this is the mass of liquid leaving or coming out in the same time delta t. I will write from the law of conservation of
mass from the law of conservation of mass my dear. जितना mass बेटा end 1 पे enter होगा in the time in the time delta t, उतना ही mass leave करना चाहिए in the time delta t. There can't be increase in mass, there can't be decrease in mass my dear. So m1 has to be equal to m2. So I will write it implies Gubermion m1 is equal to m2. Now substitute the values. m1 की जगह बेटा है ρ1 a1 v1 delta t is equal to m2 की जगह ρ2 a2 v2 delta t Gubermion. अब यहाँ से देखो बेटा I will put it here. I lost my delta t and delta t, and also लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल. हम बोलेंगे सपोज बेटा लिक्विड जो है आइडियल है बेटा, जो कि हम मेजॉरिटी केसेस में लेते हैं बेटा. व्हेन द लिक्विड इज आइडियल मीन्स इट इज इन वन ऑफ द प्रॉपर्टी और आई शुड से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल फ्लूइड और आइडियल लिक्विड इज Gubermion, it is incompressible. When it is incompressible, the density is same. So I can easily, I should say, cancel ρ1 and ρ2. We are left with a1 v1 is equal to a2 v2. So you can see my dear, there is change in area, there is change in velocity, there is change in area from a1 to a2. At the same time there is change in velocity from v1 to v2, or I can say the product of area and velocity that should remain constant, and which is nothing but the equation of continuity. This is going to be the important result my dear. We are approaching towards the new topic, one of the important one as far as the application and the board part is Gubermion concerned. That is what you call as Bernoulli theorem. और उसका जो application part है बेटा, उसमें हम ये AV is called constant को यूज करेंगे बेटा. सो अगर यहाँ से बेटा एक रिजल्ट Gubermion आप याद रखोगे बेटा, मैं बोलूंगा बेटा whenever fluid encounters constriction, or I should say whenever there is the reduction in the area, there will be increase in the velocity, and vice versa. If there is increase in the area, there is decrease in the velocity. This was about equation of continuity. Let's move onwards my dear. The next topic for we people is energy of a liquid, or I should say energy of a fluid. Energy of a fluid. सुनिए बेटा, the different energies associated with the fluid are what we call as pressure energy, kinetic energy, and the potential energy. So I will write directly Gubermion the different energies. The different energies associated with the liquid, or I should say fluid, liquid, are number one for we people is what we called as pressure energy, which is by virtue of its pressure. Number two is, which is not the new one for you people, what we call as kinetic energy, which is because of motion, by virtue of its motion. And the third energy for we people is what we call as potential energy. These are the three energies associated with the fluid. This is the potential energy for we people. Now, as far as the kinetic energy, I will start with the kinetic energy my dear. As far as the kinetic energy is concerned, जब हम kinetic energy की बात करेंगे बेटा, suppose you are having some fluid in motion of mass m, and the velocity of that fluid is Gubermion v. Now as far as the kinetic energy is concerned, I will directly write kinetic energy is simply given by half of mv square. ये आपकी बनती है बेटा kinetic energy. Now in the upcoming, I should say topics, or I should say in the upcoming topics, we will be interested with the kinetic energy per unit volume. So I will write the next quantity my dear, that is kinetic energy per unit volume, that's given by K by V. जब मैं यहाँ से बेटा डिवाइड करूंगा बेटा, it is half of m v square
divided by V. But please beta, don't cancel V with V. This is velocity here, this is volume here. Now kinetic energy per unit volume, let's represent it by the new symbol K prime, suppose, that is given by 1 upon 2. Your mass per unit volume is density of the fluid, साथ में V square beta. So this is the expression for the kinetic energy per unit volume, जो मुझे आगे चल के बेटा काम आने वाली है बेटा. Now the next energy for V people is Gubernoon here, that is Gubernoon potential energy. जब मैं potential energy की बात करूंगा बेटा, और यहाँ पे मैं बात करूंगा बेटा what we call as gravitational potential energy, and you already know the expression for that. मैं बोलूंगा suppose मेरे पास कोई fluid है बेटा, फिर से मैं बोलूंगा बेटा कोई fluid या liquid है मेरे पास बेटा, जिसका जो Gubernoon mass है बेटा, that is Gubernoon m, और उसकी जो height है बेटा, कोई पोजीशन आप सिलेक्ट करोगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन, उसकी हाइट है बेटा h. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय u इज represented by the symbol u is simply given by mgh. This is the expression for potential energy, and again I will be interested with the potential energy per unit volume, so I will write u by v, that's potential energy per unit volume is given by mgh divided by volume. Potential energy per unit volume, let's represent it by the symbol u dash, is given by mass per unit volume is again density, it is gh. This is the expression for the potential energy per unit volume. Now the next energy जो यहाँ पे है बेटा हमारी, that is what we call as pressure energy my dear. ध्यान से सुनना बेटा, pressure energy. जब हम प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं बेटा, हम बोलते हैं it is the energy associated, it is the energy associated with the fluid, or I should say liquid, by virtue of its pressure. By virtue of its pressure. Let's have an illustration, उससे हमें क्लियर होगा बेटा what my pressure energy is. अब एक काम करेंगे बेटा, suppose मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना बेटा. Let us suppose we are having the container here. This is the container for V people. और यहाँ पे एक piston है बेटा, which is frictionless and the movable. और यहाँ पे बेटा suppose liquid की level कुछ यहाँ तक है बेटा. Now, what I will do my dear, मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं यहाँ से कोई force लगाता हूँ बेटा. Suppose that force is Gubernoon F, और मैं यहाँ पे जो area मानता हूँ बेटा, that is A. You can go for force per unit area, that is nothing but the pressure, that's P Gubernoon. Now what I am doing Gubernoon, मैं जब यहाँ से force लगाता हूँ बेटा, ये जो piston है ये displace होता है बेटा. So piston की suppose नई position कुछ ये है बेटा, ध्यान से देखना. This is the position 1, suppose this is the position 2. So जब मैंने piston को आगे लिया बेटा, I applied force at the same time beta, displacement we produce V, that is suppose Gubernoon X. In general I performed work. Work for what my dear? Work for I should say Gubernoon और fluid tank के अंदर लेने के लिए बेटा. So जो मैंने piston पे force लगाया बेटा, at the same time piston displace हुआ, उसकी वजह से और fluid या और liquid जो है वो tank के अंदर गया बेटा. So I performed work. Whatever work I am performing my dear, yeah, whatever work is done here, that work is stored as energy, what we call as pressure energy my dear. So मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, when we push the piston, piston inwards, volume of liquid, when we push the piston inwards, volume of liquid which goes inside the tank is equal to, volume is a product of three lengths, it is area here, और यहाँ से तीसरी length आती है बेटा x, so I will write simply it is A into x. Now I will write Gubernoon force on piston,
as far as the force is concerned, my dear, you are applying the force F, but I will express that force as pressure into area, because pressure is expressed as force per unit area. Then the force is pressure into area. Force on piston is pressure into area, that's P into A. I will write work done for pushing the fluid, और जो फ्लूइड जिसका वॉल्यूम जो है बेटा दैट इज AX into the tank, that work is given by, work is the product of force and displacement. The force is F, the displacement is X, but the force is PA, so I will write PAX. This is the work done, जो work हमने की बेटा for pushing the fluid into the tank, और यही work जो है बेटा I will write this work done is equal to pressure energy. This work done is equal to pressure energy. So I can write down, my dear, now pressure energy is equal to PAX, where P is the pressure, A is the area, X is the displacement, or I can say the product of the two, area and the displacement, that is volume. अब pressure energy के साथ साथ बेटा I will be interested in pressure energy per unit volume. Pressure energy per unit volume. Pressure energy per unit volume. So pressure energy per unit volume will be equal to pressure energy divided by volume, which implies the pressure energy is PAX and your volume is again A into X, that is the product of three lengths, so the answer is simply P. So we can make the conclusion that the pressure energy per unit volume is simply equal to the pressure. So we can make the conclusion, governor, pressure energy per unit volume, is equal to pressure. सो जब भी अब मैं बेटा टर्म P यूज करूंगा बेटा, ये मेरे लिए टर्म प्रेशर भी होगी, एट द सेम टाइम ये हमारे लिए टर्म होगी बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ आई शुड से द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट माय डियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इनफैक्ट आई विल से गुबरमोन, इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस है बेटा एज फार एज द बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, एंड दैट इज द रिमार्केबल प्रिंसिपल इन फिजिक्स व्हाट वी कॉल एज बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज प्रिंसिपल. It is Bernoulli's theorem, or you can say it as, you can call it as Gouvernement Bernoulli principle. Listen to me my dear, it's going to be easy for we people. मज़ेदार है बेटा. मैं बोलूँगा बेटा आई विल हाईलाइट फ्यू थिंग्स गुबरनोर एज फार एज दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न. मैं बोलूँगा बेटा इस प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद, इस थ्योरम को पढ़ने के बाद इसकी एप्लीकेशंस को जब हम देखेंगे बेटा, आफ्टर दिस टॉपिक बेटा यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक, आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे बेटा. सपोज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज जो एरोप्लेन है बेटा वो कैसे टेक ऑफ करता है बेटा, या उसको कैसे अपवर्ड लिफ्ट या अपवर्ड फोर्स बेटा मिलता है. इसी तरह बेटा आपको पता चलेगा बेटा ड्यूरिंग विंड, जब हवा तेज चलती है बेटा मकानों के छत क्यों उड़ जाते हैं बेटा, इवन इफ दे आर आई मीन फिक्स्ड विद आई शुड से विद द वुडन स्टफ और अदर स्टफ विथ नेल्स सो ऑन एंड सो फोर्थ. और इसी तरह बेटा अगर दो शिप्स बेटा क्लोज जाते हैं बेटा, there are maximum chances of collision. वो भी हम देखेंगे बेटा. That also works on this principle, what I call as Bernoulli principle. और इसी तरह बेटा कभी कभार आप रोड पे चलते हो तो ट्रेन कोई गाड़ी जो है आपके बिल्कुल क्लोज जाती है बेटा, और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ड्रैग पड़ता है, कोई फोर्स पड़ता है टुवर्ड्स दैट कार, या वार्निंग दी जाती है बेटा कि मूविंग ट्रेन जब होती है बेटा, व्हेन द फास्ट मूविंग ट्रेन इज देयर, आप प्लेटफॉर्म से दूर रहो, आप उस ट्रेन के नज़दीक मत रहो. दैट इज वन ऑफ द रिस्क. और इसी तरह बेटा आपने नाम सुना होगा एटोमाइजर या स्प्रेयर का बेटा. दैट स्प्रेयर वो कैसे वर्क करता है बेटा, दैट इज अगेन द बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम. सो ये डिफरेंट बेटा प्रिंसिपल है बेटा, डिफरेंट एप्लीकेशन है बेटा इस थ्योरम के बेटा. नाउ इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन व्हाट दिस थ्योरम इज एक्चुअली माय डियर, विदाउट मेकिंग इट complicated government,
इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे बेटा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बेटा हमारे लिए। मैं बोलूँगा बेटा व्हेन वी गो फॉर बर्नौली प्रिंसिपल, व्हेन वी गो फॉर बर्नौली थ्योरम, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है बेटा। इट इज़ एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन मोशन, दैट्स इट। कि जब भी आपके पास एक आइडियल फ्लूइड होगा, नाउ यू कैन रेज द क्वेश्चन व्हाट माय आइडियल फ्लूइड इज, देयर आर नंबर ऑफ, आई शुड से द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। सपोज बेटा आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी ये है बेटा कि वो नॉन विस्कस होता है बेटा, मींस उसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो 0 है बेटा। और इसी तरह द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज दैट इज इनकम्प्रेसिबल बेटा, मींस द डेंसिटी इज कांस्टेंट, you can't compress that. And the third one is when it is ideal fluid in motion, the flow is streamlined. And you should know when you deal with the streamline, the velocity of each and every molecule of the fluid, each and every particle of the fluid, that is constant. एक बार फिर बेटा, when I am saying what my Bernoulli principle is, what my Bernoulli theorem is, मैं बोलूँगा बेटा hey, it is not new thing for we people, it is nothing but the law of conservation of energy for an ideal fluid in motion. When I'm saying ideal fluid, the typical, the important, the most important characteristics of an ideal fluid is that it is non-viscous, your coefficient of viscosity is 0, it is incompressible, means you can't compress it, means the density is constant, and the third parameter is the flow is streamlined, that is velocity is constant. So about Bernoulli principle, I will write first line, my dear, the principle is actually law of conservation of energy for an ideal fluid. Simply law of conservation of energy. And you know what my law of conservation of energy is? Law of conservation of energy is simply that the total energy of an isolated system that remains constant. Now increase होती है ना decrease होती है. However, from the law of conservation of energy conversion is always permissible. Energy can be converted